प्रेझेंट करा ऍडमिट नाही केलं तो माऊस काय कर
That's the yeah, I have a see now. Yes, yeah. They also want to Hey, who is this new fellow? New admission. And old admissions are all in corner. Come forward, everyone. Hey boy, come forward. Today we are going to have that MCQs and other things, map work. And come closer here, there. So what will happen now? Instead of putting me into, hey, who is online today? कौन है? Online कौन है? आवाज कर. Sir, I'm Or why didn't you, Arya, why didn't you come here? Take up your volume of economics as well as geography. Huh? Yes, we were doing our globalization only, you remember. So he is coming to see me or give me a farewell. ये कितने महीने पहले आया था तू? Hey, last lecture did we finish that chapter called Money and Credit? Money and Credit did we finish, guys? Yeah. All MCQs also done. And what is the other one? That also done. Is there any question of SHG or anything you want to? Simple. In fact, ये आप लोग का डिमांड था उसीलिए मैंने बोला हाँ ठीक है कैसे करेंगे तो स्लॉट दीजिए आर्या ही है ना इज द गेस्ट इसको अंदर नहीं आने दिया ये कौन है निमाई कौन देगा दो पता hey both of you Arya and Nimai and Ayush take the book economics book our volume only just go one chapter behind that is sectors of Indian economy that is to be you can come here और उसको बोला लो सामने इधर आ जाओ because very few na why go last now you come here one on a bench now take that chapter called sectors of Indian economy it's I seems to be having a good feeling that this year SST paper should be the easiest one. Good feeling है gut feeling तो नहीं बोल सकता because this year they have introduced two board exam pattern everybody knows
In school, what did they tell you for 2 board exam pattern? The first board, it's a normal board. The percentage, I don't know how they are going to calculate and how are you going to decide. It is as good as science. It is as good as a class improvement paper. You know what is a class improvement? I mean, I am very good in physics, for example. 12th में हम लोग करते हैं. चलिए. जो भी लेकर आएगा मेरे लिए पानी लेकर आएगा. बच्चे लोग को नहीं क्या अच्छा मैं देखते. So what I am trying to say that first board exam, I think many are into science and you feel physics, not physics, entirely science. And you can give the second board exam, which is in the month of Feb, not Feb, March. But how they are going to add that marks into your admission? मुझे जितना मेरा CBSE में पैसा होने वाला सर admission हो जाएगा, and we'll keep that particular person who he or she has given the second paper in provision. You know what this provision means? मतलब if at all that percentage of science improves, you can swap, you can switch. अगर नहीं improve हो रहा है, you can continue the stream. ये पहला है. दूसरा, you are already in 90 plus, एक example, correct? And you got your stream, science, in one of the good college. You can't get it in the best college. You know the college where I've come out is minimum 98 or 99. तब तेरा percentage में third list में लग जाएगा या second list में लगेगा, first list में तो लगेगा भी नहीं. ऐसे college से हम लोग पढ़ के. Mine was some 99.79 something in 12th. First bench, don't go around. And was super tough. And then फिर डिग्री में थोड़ा सा मैं मेहनत करता कम हो गया, तो डिग्री का पढ़ाई भी थोड़ा डिफरेंट होता है ना. So what did they ask me to do to apply for a provisional certificate? अभी from CBSE or ICSE, if I get provisional, they add plus 5% in those days. Those days मतलब 15-20 साल नहीं है, 12-13 साल पकड़. So I was 100 plus. But 100 plus मेरा इसमें नहीं दिखेगा, वो admission के लिए. Now what are you going to be very superbly planning ना? The main 2 core subject is your maths and science, no doubt. अगर आपको लगता है कि पेपर आपने बहुत अच्छा दिया है, but the marks which is tallying is not good. Generally the option till now CBSE offer is what? A revaluation. And 99% I am very sure reval में 1 mark या 2 mark वरना तो same as earlier ही आए नहीं आए. उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर फीस भरना पड़ेगा एंड एडमिशन कैरी फॉरवर्ड करना. अंडरस्टूड? तो व्हाट आर यू डूइंग? अभी पेपर खराब आया है फॉर एग्जांपल मैथ्स एंड साइंस का, एंड 90% पीपल आर फीलिंग नहीं सर, फिर वो देखो अभी कितना पेपर आपको देने के लिए बोल रहे हैं. इफ दे आर आस्किंग टू गिव यू ऑल 5 देन यू आर इन अ सूट. इफ दे आर आस्किंग टू गिव यू कोर सब्जेक्ट, you know what is best of 5 is it? How many are taking just certain other subjects like French or क्या है? Marathi is it? AI लिया और French भी लिया. These papers are not going to be tallying for your percentage. हाँ नहीं है. This math, science, English, SST, and which is the other core subject. Now then, अगर आपका कॉलेज AI में है या कुछ है, तो these percentage will boost you for your admission बस. And mentally आप relax रहना. 10th is only to get admission in 11th and 12th. 11th आजकल तो इंटीग्रेटेड का फैशन है. कोई तो एक लड़की बैठी थी मेरे साथ, तो देखा ना, she is my 10th ICSE girl अभी, तो she was saying नहीं सर मैं तो इंटीग्रेटेड ही रही. You know what is that? What is that? सर ने इधर कुछ गाइडेंस लेक्चर लिया है सर, वो कॉलेज 11th and 12th plus 9th and 10th you will study in 1.5 years. How many of you know what is NEET? NEET full form? नहीं. हाँ तो बता. हाँ किसने आना बोलो, कोई जिसको पता है. Sign it also. It is national level engineering entrance test. That is for medical. And if your bio is strong, आपको 11th में पूछा जाएगा, is it PCMB or only PCM?
PCM, you are lying diverted to JEE. What is that? Engineering, joint level engineering eligibility, entrance for engineering. You don't know. You don't sign. So we believe either you plan for your JEE or you plan for NEET is up to you. मतलब stream दोनों एक ही साथ जाता है. अगर bio लिया है तो NEET दे दो, नहीं लिया है तो. But I am of the personal view. It's up to you. Many students after come in quick. After that 10th they want to take a breather. What is that breather? सर मुझे एक साल का थोड़ा सा है ना. हाँ 11th भी करना है but ये और क्या बोलते हैं रेस में नहीं भागना. So then you take your 11th as it is in your school. I think majority school are having 11th as well. If they are having, just follow. They are not going to fix percentage. है ना उधर की बच्चा है ना ले ले. Very smartly for the 12th you join in integrated class. Sorry, only for अपना 11th में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी कर लिया पढ़ाई से थोड़ा सा दूर मत जाना then you are trouble. 12th में ज्वाइन कर रहे हो क्या है ना वो 4 लाख 3 लाख 5 लाख का फीस सीधा 1.5-2 लाख का है. चलो पर्सनल क्लासेस लगा लो if you are going for medical exam and for PCM. अगर आप going for JK exam या हमारे UTB करता है टाइम मुझे पार्टनर है लाइन में आउटसाइड आपका पहला मेरा मतलब मेरे पास आकर के मैंने बोला एग्जाम में जाना था बट 11th तक नॉर्मल स्कूल से they are not going to push you into that rat race. नॉर्मल जाएगा सब कुछ रिलैक्स रहेगा. तो जैसे जैसे आपका वो एनुअल एग्जाम आ रहा है ना 11th एनुअल एग्जाम try to check any classes who take class only for 1 year. वो तो कभी भी लेते हैं क्या है इसका मतलब. तो 2 साल के बाद वो बोलेगा ना सर मैं हाँ बोलेगा आ जाऊँ ठीक है क्योंकि वो फिर मतलब दूसरा आपको घुसाएगा और वो पढ़ेगा. Very smartly spare 1 year of fees. Enjoy your 11th studies happily with your studies. मेरा बहुत सारा स्टूडेंट्स है जो ना 11th ना 12th इंटीग्रेटेड गया है. He or she has cracked NEET in the second attempt only without any classes. और जो क्लासेस गया बेचारा 4 बार अटेम्प्ट करके 5वां फिर वो लड़की को लगा because that college she was thinking only score नहीं मिलेगा. Understood what I'm trying to say? I am always of the view that education that you should be getting it is a punishment. Is it so? Enjoyment कैसा रहेगा? नहीं पापा ने बोला इधर जा पापा फील करने के लिए पापा फीस भरेगा. Then what are you going to do? And to be very frank ना मेरा कुछ ओनर्स लोग है जो ये सब चलाते हैं वो दे आर क्लोज बडीज क्योंकि मैं वो कॉलेज के थ्रू इनको बहुत सारा काम करते हैं बोर्ड के. तो बोलते सर एक बैच रखते हैं हम सिर्फ एलीट बैच बाकी 4 बैच तो कचरा बैच. अंडरस्टूड. हाँ उधर आपको एडमिशन डाल बेटर बट वो 4-5 स्टूडेंट पकड़ के रखता है फोटोग्राफ्स. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग. yeah but बाकी 11th failed from one of the very topmost class. She can't have of best place. Child had gone into trauma. मेडिकल ट्रीटमेंट करके फिर वो बच्चा प्राइवेटली करके फिर वो बच्चा नहीं कर अलग तो गया उनका छोटी सी तो उसने क्लासेस दे वो लड़की को तो जरा भी कौन सा कॉन्फिडेंट क्या है लड़की ना गर्ल बस 10th स्टैंडर्ड माई बच्चों वेरी शार्प हो बेचारे उसको ऐसा भीड़ में बिठा के बोलते ना तो तुझे कुछ नहीं आता क्या पूछने जाएगा तुम पढ़ा नहीं का. You understood? Till 10th you are physics chemistry is so strong, but 11th में उधर जाके उसने ऐसा तुझे ट्रीट किया जैसे कि तू तो anybody will feel bad. So be smart. Take your parents. Go and attend the counseling what they are saying. Anyway here also. Decision maker should be. Because I now met a parent as my mother is it. I don't know what उन्होंने भी बताया. But क्या हो जाता है ना parent अपना लेवल का सोचता है. Action तो आपका ही है. You go to different, attend it. And Cbse is giving me 2 board exams just for this class improvement. And अभी आपका स्कूल ने बोला रहेगा ना कितना पेपर दे सकता है ऐसा कुछ बोला है हाँ क्या बोला कितना only ना हाँ that is what 4 सब्जेक्ट दे सकता है और एक ही देना है या पूरा देना है पूरा ही देना है नहीं कोई तो कोई 3 पेपर दे सकता है हाँ वही वो top 5 में से any 3 top 5 में से नहीं because it becomes trouble for them to correct me. So imagine maths खराब गया for example
So you be prepared कि maths देना. You're landing at somewhere 87. Try to map to the subject during my college days. We used to push 99, 99 minimum. क्योंकि maths is scoring. हाँ, थोड़ा सा physics, chemistry में मेरा डप होता था. Biology was a little bit stronger for me. So we always believe what my students are going through. You came just now. अरे जाओ. अंकल वो शीट करना एक बच्चे ने सही नहीं. वो भी है. वही है. Don't hide. So what are we going to do with this 11 and 12? Is as good as what are you stepping now? And what they will do 9th and 10th का basics करेंगे. 11th and 12th का भी करेंगे. तो सोच लो 4 साल का within 1 year. 8 hours of class per day. 8 hours, 2 hours का एक lectures. Plus every 14th day there is one. मतलब they will वो ऐसा बोलेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. It is their duty. But is my child ready to face that? If you are ready, join करके फिर पीछे नहीं आना. वैसा हमारा जैसा एक बार घुस गया तो कुछ भी हो जाए करना ही करना. बट हमारा अभी का जनरेशन जेनजी है ना, यू कैसे 2 दिन के बाद बोलता नहीं सर मैं जी जी देखो. पर वही बच्चा मुझे लड़की है 4 दिन के, सर मैं नीट देखा तो कैसा है. ठीक है, एक हफ्ते का सर ये दोनों छोड़ दो सर, मैं ना आईएएस एग्जाम कर रहा. Ultimately she withdraw the admission. She has done HR and after that she is working in TCS company. You know what is TCS? One of the best. Data consultancy. अच्छा, he also knows. That girl gets I think monthly 1.5 या 2 लाख का पैकेज है उसका monthly. ये मैं 7-8 साल पुराना बना 12 साइंस की लड़की. And she was so impressed by my method of teaching. She went to my college. She has completed entire economics. And बोलती रहती थी सर क्या कॉलेज है मेरा नहीं है, मैं उधर से पढ़ के बाहर. And she has done entire economics. You know my weakness. अरे I don't remember your name. ये तो बहुत पुराने Just remember your college name. कॉलेज नहीं मालूम है. वो बच्चा जिसने मेरे कॉलेज का नाम राम नारायण भैया एंड पोदार भैया आर्यन पोदार. आर्यन पोदार is our sister company. Main is the Ram Narayan Rui, RRC बोलते हैं. Top India में it is one of the 3rd or 4th college. और एडमिशन भी वैसे होता है ना 98 99. देखो what was my duration, what was my professors. I was trained by a maths teacher who was my vice principal. पूरा इंडिया में उस मैडम का टॉप मोस्ट सेलिंग मैथ्स का बुक्स जाता था, मिसेस बोरवनकर. She only gave me the admission. इतना ब्राइट हो गया तो इतना लेट क्या है मैडम. वो है ना मैं थोड़ा सा बाहर से अभी क्या कर रहा है मैडम. आप अभी मुझे एंटायर इको देगा तो आया तू आ जा. यू आर स्टार ऑफ माय कॉलेज. बहुत मोटी सी गुड़िया भी मुझे शायद शी इज अलाइव और डेड. वेरी ब्राइट टीचर. मैथ्स तो उसका नॉलेज ऐसा था ना, आई कैंट फॉरगेट लर्निंग मैथ्स फ्रॉम दैट गुड फैट लेडी. So you should go to such colleges ना. You won't see a single girl or a boy doing आलतू फालतू. तो चलता है कैंपस में बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज. You will get underground classrooms and वो उनका फेस्ट का भी बड़े बड़े VIP आते हैं. I remember all the Bollywood girls used to come and dance in our functions. मैं तो 3 साल भी एक भी फंक्शन अटेंड ही नहीं किया. नहीं मैं पढ़ाई से एक बार गया था कोरोना ठीक है. Because every year they want to show to that particular Bollywood का जो अभी का जो टॉप मोस्ट है ना वो आता है. तो खुद ही बोलेगा हाँ इस कैंपस में आपको ऐसा लगता है. जो भी था उस साल का जो टॉप मोस्ट है उसको लोग इनवाइट कर. तो यू विल फील व्हाट आर यू डूइंग इन दैट कॉलेज. अब ये जितना भी वाशी नवी मुंबई है ना, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, ऑल ब्लैक लिस्टेड है ना. ये मिनी सिचर में क्या बोलता है झुंझुनू वाला है ना. हाँ, that is from original is from Ghatkopar and VT. So there are very good colleges. Even Nehru Life Science had a very good rapport, but अभी खत्म. मैं कॉलेज को भी ये भी करता हूँ. The group of boys and girls who enter every year, D grade और टीचर्स भी वैसी. मेरा खुद का स्टूडेंट्स उधर मैं जाता हूँ तो अरे सर इधर मत, अरे इधर गेस्ट लेक्चर किया है. So keep a target. Your next year admission should be one of the best top post.
हाँ फिर वो जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आप देखिएगा ना एनवायरमेंट, अब बोलेगा भाई 10th में तो मेरा लाइफ को ऐसे कचरा की तरह निकला है, एवरी स्टूडेंट स्टडिंग सिटिंग इन द लाइब्रेरी, हाँ मजाक मस्ती वो चलता है, बट यू कैन सी जैसा मैंने देखा 90% ऑफ माई वेरी गुड स्कॉलर गर्ल्स एंड बॉयज दे विल ऑल मीट मी इन द लाइब्रेरी एंड बुक्स के लिए इतना मारा मारी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है उनका। अभी तो मैंने सुना लाइब्रेरी भी एकदम सीडी रॉम में है, आपको अपना ईमेल आईडी डाल के वो डाल देने का, वो ईमेल आईडी से सेलेक्ट होकर आपको रिप्लाई आ जाता, बुक आ गया और इस जगह पर इस कोड पे जाके लिख डिजिटल आपको। जब मैं उधर कैंटीन में था कुछ नहीं मिलता था, बड़ा पाव चाय, अभी तो मैंने सुना मंचूरियन से लेके बड़ा टीवी डाला है, सेट डाला है, इट्स लाइक एमसी इन कॉलेज एंड ये लड़का लड़कियां मस्ती करते हैं, कैंटीन इज मतलब सुपर। एंड वो कैंपस आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बड़ा सेंट जेवियर गया है, सेंट जेवियर इज बेस्ट, बट दैट वाज लिटिल बिट फार एंड थोड़ा सा उधर ये सब जरा ज्यादा चलता है, तो मेरा मम्मी पापा ने बोला इतनी बस तो उधर मत जा। So that is in the VT. You might have seen वो VT interface right side में जाएगा तो फिर so you will see how children, I cannot say girl or a boy, are competitive. And law के लिए तो अभी अपना यूपी में भी क्लैट का स्टार्ट किया है, you know after 11th and 12th it is not only commerce student, science students are entering into law like anything. You know what is CLAT now? Common Law Aptitude Test. And there is one of the best college in Churchgate. High Court का retired and Supreme Court का retired judges lecture लेने आते हैं, guest lecture, है ना? You will feel this law has become lucrative, and I am personally into one, which I will not disclose now. Later I do, जब मेरा certificate आ जाएगा, है ना? So that seems to be my and कोई भी उसका भी exams है ना? अभी मेरा तो थोड़ा सा आगे हुआ तो आई डोंट गो थ्रू योर प्रोसेस, अभी मैं उतना छोटा भी नहीं है ना, क्लैट दो फिर एग्जाम, तो दे पुट मी इनटू सर्टेन एडमिशंस व्हिच ओनली द मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, कॉर्पोरेट है, फिर क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है। महाराष्ट्र का एक लॉयर है जो पूरा यूरोप में रहता है, लंदन, हाँ व्हाट इज हिज नेम, हाँ करेक्ट, आईफोन कंपनी एप्पल has have 23 beneficiaries, उसमें ये एक है, you know what is a beneficiary? जो भी आईफोन का प्रोडक्ट आज लॉन्च होता है मार्केट में आज, उसका 10 दिन पहले ये बेनिफिशियरी को ओरिजिनल पैक के साथ उनके घर में फ्री जाता है। कोई भी आईफोन हो, आईमैक हो, मतलब एप्पल का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा इस बंदों को जाएगा। He fought the case was that India and Pakistan वाला case just for 1 rupee, and he's a big fan of this, you know, and he's a proud Maharashtrian. Really like him. हाँ, I did. अच्छा हाँ सर, ये बताया था सर ने। अरे रिलैक्स सब छोड़ दे, वो सिर्फ इंटरव्यू ना गाड़ी में देता है, एक 5 मिनट का इंटरव्यू देता है, वो भी वो करस्पॉन्डेंट, फिर घर जाते जाते करस्पॉन्डेंट को बिल जाता है 7 लाख का, इंटरव्यू लिया उसने गाड़ी में बोलते ये फिर भी टाइम निकाला तेरे लिए, वरना वो भी नहीं निकाला। ऋषिकेश ना व्हाट्स हिज फुल नेम, आई फॉलो हिम लाइक एनीथिंग, एंड इंडिया का जितना भी इंटरनेशनल केसेस है ना वही लड़ता है, एंड वो पाकिस्तान का तो छोड़ ही दे, इवन अमेरिकन लॉयर्स कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। Shall I show him? Who is he? You don't know all this? Sir, please screen share. हाँ करूँगा करूँगा, don't worry. Today they are not going to study there. हाँ तू आते ही तो अभी निकल, ये भाई साहब सबको बेंचमार्क डालते जा रहे, क्यों रे किसको टाइम दे रहे, टाइम किसको दे वो बता, मैं सुन ही रहा था टेलीफोन में कैसे बात कर रहा था। You don't want to sit, you run away ना, नहीं क्या है क्यों, अच्छा इसलिए, अरे मैंने देखा है मराठी टीचर्स ना, इफ दे आर लेडीज है ना, व्हाट इज फर्स्ट नेम, मैं उसका नाम सालवे 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 अभी सालवे He is born and brought up Maharashtra only. Yes sir. But अभी वो पूरा ये उसका पूरा बिजनेस यूरोप में, हाँ ये अभी ये पाकिस्तान जेल में है और उसका भी केस मिस्टर सालवे में। Just listen a short interview how he talks influential है, अर्नब के साथ है वो बंदा। हाँ कर रहा हूँ, let me put some
Mr. Sunday, welcome. We've been Shankar on with us. Let me take the discussion forward by putting it in this way. I said just a while back that hold, and let me. and play down what Or happened. shall I put his interview instead of? ना रुकना मतलब पॉडकास्ट चाहिए क्या इन्होंने दिया पॉडकास्ट लंबा छोड़ा रहेगा इस सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट Harish Salve, a senior advocate of the city. wait you should learn these persons life एक तो हाईटा के इंटरव्यू पर ही करते हैं अच्छा ये is into that FICC I will share with you. it's already shared na hey bye पूरे हाँ ये सारी वो जाइंट स्क्रीन में वो बात कर रहा है वो घर में कितने तो बैठे ऐसा नहीं पूछने का 19 साल पे ना मेरा यूट्यूब हाँ अरे इज अ वेरी रिच मैन यार सुपर एंड बोलता ऐसे केसेस लेके लड़ता नहीं वो हाँ दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सुनेगा I have it is in Hague, Netherlands. I thank the agent of India for his statement. I was seeing this case live. Invite Mr. Salve to take the floor. You're on the floor. हाँ रुक जा शेयर किया है Hey guys able to see the screen? This case is. Yes. Honorable Mr. President, and honorable members of the government. I'm grateful to the privilege of bearing this for once again. Indian government time by time बुलाता है काम करता है Deeply अगर honored नहीं is very at this opportunity to present India's case before you in this unfortunate matter relating to the life. हाँ ये इधर पाकिस्तान जेल इसका पूरा मैं केस बता सकता हूँ क्या है Honorable Mr. President and members of the court, arises out of an application filed by India under Article 40, paragraph 1 of the statute. He is representing and India Article 38 of the rules, read along with Article 1 of the optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes done at Vienna on 24th April 1963. The basis for the application on which India is pursuing relief, which are articulated in its memorial, is an egregious violation of the Vienna Convention on Consular Relations in 1963, which I shall be referring to as the Vienna Convention. The case is simple. Short of the irrelevancy sought to be injected, there are two broad issues that arise in this case. The first issue relates to the construction of the Vienna Convention, particularly Article 36 of the Convention and its application to the facts of the case. On Shall I this, tell him brief what is the position being Mr. that Singh? Councillor Actors was not granted. It's a full hearing we were listening live ये बंदे ने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा धोया The opposite lawyer of Pakistan, he charged 5 lakhs for the case, but he lost the case. He charged the Indian government only 1 rupee. He won the case of government. There is that Kuldeep Singh Jagar जो बंदा दिख रहा है ना, he is caught by Pakistan police नहीं, he is caught by some I think Oman या Qatar police. And he is a retired admiral, retired Navy officer, Navy officer. And then उन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने उसको पैसे देके इन्होंने ले लिया कि ये हमारे बारे में स्पाई कर रहा था पाकिस्तान के बारे में एंड पाकिस्तान में कैसा ना ये वियना को ये बोला ना 1963 वाला उसमें होगा नो पर्सन फ्रॉम वन नेशनलिटी कैन बी कॉट बाय अनदर गवर्नमेंट एंड केप्ट इन प्रिजन विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंट्री तो पाकिस्तान ने हमको इन्फॉर्म तो नहीं किया बट इंडिया वाज वेरी स्ट्रांग और इसको फांसी का सजा सुना ये बंदे विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडिया
and that is internationally crime for any country. But Indian government ने अभी उसको जिंदा है, is alive, but the Pakistan government cannot put it. And उन लोग ने civil court में इसका case नहीं लेके गया, उसको purposely military court में इसका case लेकर गया. He is a retired fellow. Whether he was spying or not spying, that is the concern of it is Indian government going to UN. तो हम लोग जाने से पहले पाकिस्तान very smartly क्या कर दिया? They went to UN. And UN का एक ही organization है जो कैलिफोर्निया से बाहर है. वो है सॉरी कैलिफोर्निया को उस स्विट्जरलैंड का प्लेस का नाम क्या है उधर से बाहर है and this is that first place. So this fellow was there for next 45 days and I remember सारा लाइव में आता था एक दो किस्सा लाइव आता था which we used to हमारे कॉलेज में मैं जहाँ जाता था पढ़ाने के लिए तो वहाँ मैं बोलता था स्टूडेंट्स को लाइव सुन है ना. So they said that this person is genius and the way he talks and address the entire judges now there are 36 judges who sit and from every country the judges are there and topmost judges वो बंदा बोला Hari Salve from India and he has to fight that Pakistani fellow has to fight and they are very systematically speaking जैसा वो बात कर and after 45 days UN ने declare किया कि Pakistan has convicted that fellow without any proof. So they were asked to give counselor services. You know what is a counselor services? अगर आपके घर में से कोई गया तो आपका मम्मी पापा बीवी बच्चा को आप डायरेक्ट मिल सकता है. तो ये बंदा का ये तो नहीं जाता पाकिस्तान. He went with his son. So he was asked to meet his wife. He was asked to meet his mom, and he can directly talk. But उधर भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है. But उसने गड़बड़ किया. But again, still now that person is alive. All thanks to this Hari Salve. Taking 1 rupee and fighting a case, and opposite बंदा तो 5-10 लाख लिया है. So that 1 rupee is not for money, just for fee. And after that जो cases इस बंदा को मिला रहेगा बोलता है एक दिन कोई तो 7 या 8 मिनट का इंटरव्यू था वो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने डाला हरी साल्वे ने मेरे से 5 लाख रुपए का बिल डाला इंटरव्यू के. तो फिर ये लोग ने पूछा क्या सर आप तो कार में बैठे थे मैं तो आपसे कार में इंटरव्यू लिया तो उससे बोला उसी लिए कंसेशन दे रहा हूँ. अगर आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू था मिनिमम 15 लाख रुपए आपको मेरा अकाउंटेंट को जमा करना पड़ेगा. Can we imagine how single merit is important to this fellow? But you and me, so this is the course. And वो इंडिया से अपना लाइफ स्टार्ट किया महाराष्ट्र से स्टार्ट किया and what is he now? है ना. तो I'm not saying you become Hari Salve. वो उसने कितना मेहनत किया रहेगा वो उसको ही मान. Even doctors we can say, engineers we can say, है ना. Even teachers you can say. So it's Indian studies na, it's too good. But thoda sa you can see some teachers are very na, and 90% teachers are on the other hand side. That is why you hate. Again, I saw one small video. I think 2 days before I went to one guest lecture. Chinese teacher अपने बच्चों को class के अंदर ले लिए. Shall I show that? It's a very funny video. But they say China government ऐसे ही teachers को बोलते हैं तो छोटे बच्चे हैं and हम अपने बच्चों की फिर कैसे ट्रीट करते हैं वो it is something you should see how this government is putting pressure on the teachers to teach the students. आज मैं कुछ ठीक है मैं कुछ अलग ही लाइन में जा रहा हूँ. हाँ बस कोई बात नहीं यही बोलेगा पहले. क्या करें वेलकम स्टूडेंट्स इनटू द क्लास. ऐसा मैं बहुत कुछ स्टडी करता रहता हूँ वेलकमिंग स्टूडेंट्स ना. And you laugh actually, but I feel never I have welcomed any of my student like this. This is that video. Oh. वो नहीं देख रहा है छोटे बच्चे. अच्छा ये देखो नहीं ये देखो this is a funny video. ये तो एक ही स्टेप कर दिया ना वो दूसरा टीचर का हाल हाँ ये अलग अलग स्टेप है.
जैसा वो स्क्वायर कट करेगा तो तीसरा आंसर आएगा मैं नहीं नहीं ठीक है वो बोल रही है बोल रहा है ठीक है पर तू कितना छोटा है रे वैसे करने के लिए तो बता हमको करने में कुछ नहीं तू कितना छोटा है वो जैसे जल्दी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और अब बीजिंग सिटी जाएगा ना मुझे एक में 2 बार मिला बट आई कुडंट गो ड्यू टू सम सोशल सर्कमस्टेंस टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स आर अमेरिका इज पानी कम chai in front of Beijing. You know there are trains which are running in such directions. चलता है तो एक काम करो you be in touch with me if at all I am here. Whatever I could give you the best I'll give it. Okay. Hello. Write the chapter sectors of Indian economy. It's not actual chapters. What are we going to do? Some fun exercises, MCQs, etc. etc. Sectors of Indian economy, take to page, because that is 2 main chapters are pending from my side. Correct. 7:15. एक घंटा आगे किसी को भी लोग sectors of Indian economy. Please pick up the page. If you don't write also no problem. Pick up the page. But the MCQs and other things, na we are doing. Yeah, onliners, please take to page number 150. In that, very frankly, tell me how many of you don't know to define a tertiary sector. अपने आप से. Everyone can say primary sector. Yes. What is it? Agriculture. How do you define? It's raw material is invest. Raw material is sector in which the activities are taking place to produce raw material. मैंने दिया है simple language. Then what is secondary sector? That is process to make a useful product. तो फिर unuseful product agriculture होगी. Process to make multiple material. It was manufacturing of raw materials. Manufacturing is manufacturing of raw materials. When a natural product is changed into other useful forms, by the process of manufacturing can be called as a secondary. Raw materials are converted into finished product using the current level of technology. Bolo? Finished product using the current level of technology. And what is tertiary sector? What is it? Neither goods are no problem. Electronics and are transported to different outlets. Both tertiary primary sector and secondary sector. It's only services are generated, don't say produce. Banking, insurance, transport, communication, then services of lawyers, doctors, teachers, IT engineers, etc. Now, which is the most expanding sector? Service. Tertiary. Most employment generation sector? Tertiary sector. Primary. It is the other way around. It is primary. Least employment is tertiary. Why it is least employment? Yes. Very good. It demands highly skilled laborers only. अभी आप जावा प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई कर रहा है और आपको बेसिक्स ऑफ आईटी मालूम नहीं है वो आपको लेगा अंदर बोले घर जा भाई. I remember I have done one course but अभी तो मैं बोल भी गया. The course was called as MCSC and during our school days my papa was a big fan. मेरा बेटा MCSC कर रहा है. Shall I anybody engineering only? Just computer. Microsoft certified system engineer. It costed me during my college days this much. Okay. And the salary every person जो मैं तो गया भी नहीं और एग्जाम में पूरा दिया नहीं 4 lakhs monthly and वो जिस इंस्टीट्यूट में था उसी ने ये वाशी में करता था
एक साल का कोर्स मैंने 2.5 साल में ही कंप्लीट किया। इनफैक्ट वो मैडम मेरे पीछे पड़ते जा रहे, बाहर सो के जाना यार, तो बहुत बोलते हैं अंग्रेज को कभी आता भी नहीं होगा। आता हूँ ना, महीने में एक बार आता हूँ। I never used to go to the classroom. So these are IT which are highly volatile. You know what is volatile? By the time you take the course, by the time you finish the course, there is big changes. अभी आज का एक इंसिडेंट बोला। Today I was with my mother who had some neuro related treatment. I met one young fellow, मेरे से भी ज्यादा young था. He is going through depression. वो फाइल से करो सर, मैं ना डिप्रेशन में जाता तो इतना young है, मैं IT कंपनी में काम करता हूँ। Latent depression every day sir we have focus. ये प्रोजेक्ट 3 महीने का प्रोजेक्ट है, मतलब कब करने का, मतलब 15 दिन में कर देंगे। ये विड्रॉ करके कोई तो पॉलिटिशियन के छगन भुज पहले कुछ तो बोले छगन, उसी का कॉलेज में ये बंदा पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, और इसका खुद का कंपनी भी है डिजिटल मार्केटिंग का। So whenever we talk about the word IT, it is service. Can I say hotel and tourism? Which sector? Sure. Yes. Sure. How hotel is a service industry? क्या था? So people inside the hotel provide service to the guest staying in the hotel. Very good. It is lodging, boarding services. ये किसी के मुंह में नहीं है? Have you visited any time 5-star Taj? Gone and Yes, sir. गया है? तो ये उसका पापा सिक्योरिटी है, साला सब दे देता है। किधर हॉल में गए थे? हॉल में गया। I've gone into this ITC Grand Central. दो तीन बार तो सिक्योरिटी से मेरा ऑलमोस्ट झगड़ा होते रहेगा सर, ये नहीं ये मैं ना, तो मेरा क्या है, मैं इधर ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम देने तो क्या, तो पैसा बढ़ेगा ना उसके लिए। एक बार तो मैं एग्जाम देने गया, बट दैट सिक्योरिटी थॉट आई एम द एग्जामिनर, ही गिव मी नाइस कप ऑफ कॉफी, फिर कुकीज वगैरह मंगाया, क्योंकि ये लोग दोनों लंच के लिए थे। एंड बाय द टाइम दे केम इन, आप इधर इंटरव्यू देने हैं, आपको कॉफी, मतलब आपने पूछा तो मैंने कॉफी बोला, पैराफिन वगैरह डाल के फर्स्ट क्लास दे। आईटीसी ग्रांड टेंडर कभी जाना, इधर ये परेल में, बिफोर यू गो टू दैट कौन सा गणपति है अपना लाल बाग, उसके पहले। So why I'm saying hotel is one of the powerful sector today India has developed. I mean now you wait for maybe already hotels आया रहेगा, the Zulwe International Airport. Superb 5-star and 7-star hotels are going to come to Navi. You have already have one Tunga, but Tunga मैंने देखा, बट उतना कुछ ऐसा बोल नहीं सकता कि Tunga is a very good, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलियन टीम आया था, हमारा नहीं, इंडिया का जब आईपीएल मुंबई में आया था, ऑस्ट्रेलियन टीम केम टू टुंगा एंड दे सेड बोले ये ढाबा होटल है, वी डोंट वांट टू स्टे इन टुंगा ओनली। तो इंडियन प्लेयर्स पूरा टुंगा में रुके थे, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो चर्चगेट से प्रैक्टिस करने के लिए डीवाई पाटिल में थे। मेरे एक फ्रेंड है इधर है, तो बोलता था वो लोग ना वहां से। सो यू सी होटल्स, देन व्हाट इज द नेक्स्ट? हॉस्पिटैलिटी। व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी बाय द वे? Catering for the guests. Welcoming the guests is hospitality. Hey, who is saying? Ayush, bol. Sir, caring for the guests. Hospitality management hai. You know what is hospitality management? As these 5-star hotels, and they need professional people welcoming the guests, allowing them to settle. आपने अगर कुछ 5-star hotels देखे, every guest is welcomed with garlands of flowers, little bit of tikka and little bit of that whatever Marathi or we do. ये सब हम लोग अपने गांव में वो बकरा को करने से पहले यहाँ ढोल बजा के आधा लिखता, तो कोई फॉरेनर से लाइव जा अंदर काटने जाते। पहले तो $100 तो उधर ही छीन लेती है वो मैडम जो ये सब करती है, only $100 बेचारा क्या, और एक $5 दे दे। The room services, you know, you go to Taj, the bedroom till now per night. Anybody guess कितना है उसका charges? नहीं, वो तो per night का बोल रहा हूँ रे। It is 99,999 rupees per night charge. 1,00,000 रुपया एक नाइट का चार्ज, ओनली बोर्डिंग है, बाकी तो छोड़ ही दे, बिकॉज दैट रूम वाज डिजाइन्ड फॉर दिस रतन टाटा's, वेरी फ्यू पीपल गेट इट, एंड वो बोलते हैं कि उस रूम से तो इतना कभी वो व्यू ऑफ दैट गेट एंड ताज ना, वो द सुपर्ब,
ये होटल ही उसलिए बना है कि वो ताज और वो वहां से शिप्स आते हुए, you should see that. So now you got so much of plenty of offers, hotels, tourism, है ना? And I know some people are into that management line. So there is one thing called as event management. Got it? क्या है? हाँ, हर जगह ये purpose है. फिर अभी तो कुछ लोग वो है गूगल करते रहते, तो मैंने बोला आरजे, डीजे, I don't know what all the courses they get it. Who is this RJ? DJ? Yes. Means what? You are not only doing the best services of your life, plus you are earning. And bartenders of the course, where boys as well as girls equally go. 6 महीने का course है. And that they do all tossing ये वो. And that is also there. What is it? In Singapore, I was offered for that. मुझे एक मेरा एक friend है, बता रहे तू तो 11 बजे आता है और 5 बजे भागते था ना, अच्छा खासा मिलेगा. मैं नहीं करूँगा. अरे तू आ, मैं है कोर्सेज कुछ नहीं करने का है. वन ऑफ द बेस्ट है और कौन सा मरीना बे सैंड्स इज द होटल इन सिंगापुर. इट इज वन ऑफ द बेस्ट होटल इन सिंगापुर. तो अंदर आके देख फिर भूल जाएगा. मैं मुझे नहीं, सिर्फ 2 घंटे के लिए काम कर. एंड ही वाज गिविंग मी सम गुड बार्गेन विद $6 आल्सो. But you earn in a day close to $200 multiplied by 6 days, $1,200. Not bad. महीना भर मेरा मर्जी, मैं तो 1-2 दिन भी नहीं चला था ना. बोला 2 दिन तो घर पर ही बैठे रहते, टेंशन हाँ मेरे साथ. मतलब नहीं, मुझे नहीं. Similarly in Toronto I was offered little bit of that automatic truck. I used to get $25 per hour. That truck driver get $40 per hour. And वो 2-3 जगह मेरा अच्छा फ्रेंड था, कुछ नहीं रहे, ऑटोमेटिक मोड में डाल के सोचा. एंड लॉन्ग उनका हाईवे रहता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, और ये लॉरीज अपने आप जाते हैं. वो परफेक्ट वो देखा अपना ऑटो पायलट मोड में कैसा फ्लाइट जाता है एग्जैक्ट वो. एंड ह्यूज ट्रक्स, मॉन्स्टर ट्रक्स. तो मैं इधर गड्डी चलाने नहीं आया. वो तो मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर पिछले 10 साल से चला. मतलब चला तुम लोग उधर से पंजाब से पढ़ के ये काम करते हैं, गड्डी चलता है. $40 in 1 hour multiplied by 8 hours. And I'm $25 multiplied by I used to work for 6 hours. 1 घंटा तो 10 घंटे का भी काम मिलता. So in a month 3.5 to 5 lakhs net income. अभी मुझे मालूम था अब 10 घंटे का कितना है, 8 घंटे का कितना है, 6 घंटे का कितना है. हाँ वही मुझे मालूम 7 लाख रुपए आ जाएगा. 9 लाख रुपए रहेगा. $9,600 अरे गुड हो गया. And this is nothing ना. 2 घंटा जाओ बारटेंडर के साथ रह के वो 2-3 वो तो करके दो. We Indians have this bad habit of not working, है ना? We want to keep my nose up. कुछ नहीं, उधर तो अमेरिकन तो वो दोनों के लिए भी निकल जाए. So 8,25,000. okay मेरा सी आ रहा है. So we always believe this tertiary sector ना, ये जो चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, carefully attend करो. I'm picking up one topic which is generally not taken by my student very seriously. Come to page number 154. Rising importance of tertiary sector. What is that question is saying? Look at that. Why is the tertiary sector becoming so important in India? ये question को मैं अलग-अलग वे में पूछूं. Extra significance of tertiary sector in India. What is the vital role tertiary sector play in India? Special significance of tertiary sector. The most promising sector. I can keep on naming. But my students get only, sir ने ऐसा बोला तो ऐसे ही आएगा, नहीं आएगा बस. And look at, there are 4 points, but in my notes I am very pretty damn sure I've given these points in your answers. And I don't night first point, second point, मैंने proper दिया. Next, there is one more question which I always believe the student get confused. Unemployment, underemployment, and disguised unemployment. Anybody tell me what is unemployment? Any proper. जैसा मैंने notebook में दिया है. हाँ. That is skilled for the job, yet unable to find it. Who is it subject? That I haven't given like this. I've given a very technical definition. Person who is willing to do some job but not getting person working. Able. First लिखो he is able. Qualified. Able में physical and mental fitness. And qualified.
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसा मेरा है या बाकी क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द विल टू वर्क. तो कम ऑन रिपीट, एबल, qualified and has the will to work, no job, then it is unemployed. What is underemployment then? देख के बोलो. This is the time you should use your volume. अभी तो आप मुझे पेज नंबर, लाइन नंबर सब कुछ बता सकते हैं अगर आपने. हाँ, it is on. ऐसे कैसे बोलते. Sir, can you repeat the question? What is underemployment, Ayush? but मैंने दिया है a qualified individual working below his or her qualification is underemployment. और मैंने दिया भी रहेगा a qualified teacher working as a clerk. Are you getting a job? Yes, you are. But you are losing the services of a teacher. Which is more dangerous? एक बार आया था बोर्ड में, unemployment or underemployment? And give reason. Underemployment. Underemployment is more dangerous. And then if you keep on doing that, something may रह जाएगा, फिर nothing. It shows the fake progress of the country. Correct. Very good boy, Ayush. मतलब 100 इंजीनियर है, उसमें से 2 इंजीनियर का काम कर रहा है, बाकी 98 इंजीनियर तो बेचारा छपरासी की तरह कुछ काम कर रहा है. I remember one of our very popular South Indian movie where the boy is going for an interview and he is trying to learn certain mathematics or physics का क्वेश्चन पढ़ रहा है. And बोलता है इसका तो वो आंसर है, बोलता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर चलाते चलाते बोलता है उसका तो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर कुछ तो बोलता है. I don't remember. आप बोलते हैं भैया आपको कैसा मालूम है? मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट है. But he is doing auto rickshaw. स्कूल से जा रहा था घर पे, हाँ, तो वो रिक्शा वाला बीबा क्या हुआ. देखो आपको अभी सोच लो. No more our Pandu Havaldar is not a Pandu Havaldar. He might be a BSc or a MSc graduate with gold medalist. क्या करेगा? Underemployment. So because we are saying in Indian economy, underemployment is a more serious problem because it not only makes the country show a artificial growth, but also there will be mounting tensions in the minds of the individual. अभी आप उस जगह पर जाके सैल्यूट मार रहे हो जो आपसे बहुत कम पढ़ा लिखा है. एंड ये जनरली आप कोई भी ऑफिस में देखा ना, जो आपका जो बॉस है ना आपसे कम पढ़ा लिखा है ना, देन ही और शी ट्राइज टू बॉस ऑन यू. ये मेरे साथ ही हुआ है. वन ऑफ माय बेस्ट प्रिंसिपल नाउ शी हैज बीन एक्सपोर्टेड बैक टू केरला. डे 1 से उसको किसी ने बोला वालवेश करके कोऑर्डिनेटर उसकी तरह बच करे वो थोड़ा. मैं भी पहला 2 महीना तो उसके साथ यस मैडम नो मैडम, फिर जो मेरा उसका एक दो बार तो मैंने ऑफिस में चेयर के साथ उसका ऐसा धक्का मार के थैंक यू मैडम करके बोल के बाहर. एक बार वो सीईओ के सामने, हाउ मच यू शाउट ओवर मी. अरे यू आर द प्रिंसिपल, यू शुड नो हाउ टू. अरे मैं सीबीएसई का बोर्ड का कुछ समझा रहा हूँ, आई बेट ये नहीं है. फिर 2 मिनट में ट्रांसफर फोन, हालांकि यू आर राइट टू मी, दिस इज हैपनिंग. सोचो. She told herself to be 22-year-old experienced principal, but महाराष्ट्र का क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है, कुछ नहीं आता. Then she used to ask me, and I used to talk in Marathi with that Khanupati group. Hey, you speak Marathi also. I have gone and got it. You Hindi also. Because she was typically that Christian community, only English. So whenever we are talking about this IT and other services, now we remember there is no job guarantee in IT sector anytime. Why so? By the time you master the course and enter into the company, 2 महीना आपको कंपनी देगा, तीसरा महीना बोलेगा उसका एक 2.0 या 3.0 का वर्जन है, आपने किया क्या? अब बोलेगा वो कौन सा वर्जन है. नेक्स्ट दिन आप कंपनी में जाके अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हुआ है एंड द गेट इज नॉट ओपनिंग. And he is the GM of that company. Again, he is tapping the card. Oh, gate open नहीं, and he is shouting at the security fellow. ये क्या है? System out. नहीं सर, वो बॉस ने बोला कि आपकी जॉब से निकल गया. मतलब कार्ड को लोग ने लॉक कर दिया. And no. Look at that IT man. I am not laughing on that fellow. How do I laugh on a poor fellow? I am laughing at the company rules. Certain airlines has removed, I don't know the name of the airlines, 1,500 air hostess and baki in one mail.
I think the Prime Minister of India that time, or Pagdiwala Babu, because in the name he appealed to that airlines. I know that airlines is going to the Prime Minister of India. He was a puppet, na? Madam Sonia was the. Oh, And then he appealed to that company that इनको job से मत हटाओ, छोटा मोटा job दो दो. Company बोले काम करो, आप हमको इतना बड़ा finance करो, तो हम इनको job में रखेंगे, वरना नहीं चाहिए. At one go, 1,500 airline people are removed from the job. So feel free, create a mark of yourself on the company. मतलब उधर जाके एक दूसरे के पीछे कान पकड़ना खुशी मत करो. Try to be a little bit loyal to yourself, है ना? So we always believe this question is going to come in the board exam. Write the question 7. अच्छा एक काम करते हैं. Before I come back with a break, there is page number 160. हाँ, not 160. जहाँ MCQs है उसको फटाफट रटा मार के रखो. It is on page number 169 and 170. Quickly, there are around 30. We will be solving minimum 50. मतलब मैंने मेजर जो बड़ा बड़ा टॉपिक है वो तो कवर कर लिया. Okay guys, we will meet after 5 minutes. अरे बोलने क्या करते हैं, मैं क्या बच्चा लोग recording नहीं होता है.
Ziploc सारे में को क्लास के बीच में आत्महत्या कर रहे ये जादू देखना जादू देखना इसको जादू देख चार आधा लोग होते हैं बोलो उसने क्या तो वो लोग घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं इससे पहले मंदिर लोग 70 एवरेज Very good. Let's see. ये क्या है क्या वेरी गुड इवनिंग बेस्ट बोला है ये क्या What's that? दिस गर्ल ओनली डन ऑल दिस जो गो आउट गो एंड टेल हिम
to bring that. What is that? It will be. That is up to you. Your bench spread. I am stamping on it. Hey guys, write the first question. Chalo. MCQs. MCQs. First question of sectors of Indian economy. वो तुझे बोल रही है, तुमको बोल रही है, तुम बोलेंगे मैं तुम नहीं कर तेरे बेंच के साथ. हाँ हाँ. Only write the options. I will be reading the question. हाँ ठीक है. Revise कर. I will be reading the question. You write. No no. Okay. That I will toss it up. That I will toss it up. अरे और 50 पढ़ना है तो 15 चाहिए. ये थोड़ी वैसी है. Scientific. Come. What did he say? नहीं नहीं ये भी come. बोला ना. क्या कर रहा है उसी कभी बॉटल कभी खुद कभी बुक क्या चल रहा है कभी फिर ये फिर कभी तुमको उठा के नीचे डालेंगे. तेरे my shoes. बैठो बैठो. Hey, are we ready? First question. Yes, sir. Please, sir. Not ready. ये क्लब नहीं है. मेरा वाला This is my room. Where is mine? Give it to me. सर आपका चाय गिर जाएगा सर मुझे खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. लड़कियों को ऐसा बोलेंगे तो कैसे? क्या नहीं अभी कभी ऐसा हाथ लग गया ना तो. अगला जना चाय और कप लेकर आके दो. हाँ. Ready with the first question. Come on, guys. Onliners. No. I have to do assertion and reason as well. Yes, sir. Question number 1. I am reading the question. Listen carefully. Options I will give you. You have to write the option and then either tick it or write answer as the right option. समझ में आया? चलो first question I am reading. MCQs हाँ? Questions नहीं लिखना सुनना है. ATM. Hey guys, ready? Today's date. You are going to change. No copying, no discussing. ATM is an example of dash. Don't write the question. A, primary sector, secondary sector, and tertiary. Again, I'm reading. ATM is an example of dash, primary, secondary, and tertiary. Come on. Tertiary. Hey. वाह Answer लिख उधर. very good. Sorry. Proud of very good. Second question. Hidden unemployment. I'm saying hidden unemployment is an example of organized sector. It is also called, not example, disguised unemployment, tertiary sector, or contractual unemployment. Again, I'm reading. Hidden unemployment is also called dash, organized sector, disguised unemployment, tertiary sector, and contractual unemployment. You have to write the answer. Don't write ABC. Disguised unemployment is example. Write the third point. Third question. Converting iron is a part of dash. Converting iron is a part of dash. Primary activity, secondary activity. Hey, give me a pencil quick. Tertiary sector, all of these. Primary activity, secondary activity, tertiary sector, all of these. What? Don't give the answer, you write the answer, then and there only. Basu. There. Good. Shall we? Yes, sir. Manrega. Nothing. हाँ वो MGLE. Manrega guarantees job to the poor for. अभी option start हो रहा है. Manrega guarantees jobs for the poor for 100 days, 90 days, 60 days, and 50. Again, I'm saying 100 days, 90 days, 60 days, and 50 days. Chalo. That is Manrega. I don't know. Next.
Animals. Yeah. Not animal, this is. Which among the following activity is not related to primary sector? देखो ये एग्जाम में बहुत बार आता है, it is not related है, बच्चा not छोड़ देता है, related to primary और answer बेटा, it is not related to primary. Answer: fishing, natural gas extraction, making of sugar, mining. Again I am saying fishing, natural gas extraction, not related to primary, making of sugar, mining. Options are fishing, natural gas. Sir, can तेरी तो तू चुप बैठ रही। सर इसको एक बार बता समझ में Unmute कर दो. मैं नहीं कर सकता है मास्की। सर ऑप्शन चाहिए और हाँ डन। Now I got it. छोड़। Let us go to the next one. Let us interesting one now. Which among the following workers ऐसा आया था, not very productive in the tertiary? Which among the workers is not productive in the tertiary sector? First worker, educated and trained professionals. Protective नहीं, not productive, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते. Second, repair persons and daily wage earners. 3, people in defense services. People working in health centers and hospitals. Again, I am saying 1, educated and trained professionals, repair persons and daily wage earners, people in defense services, people working in health services. Not very productive. Well, educated and trained, repair persons, people in defense, people in health centers. So can you repeat that? Who are not productive in the following sector? ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है. Next, public health is the responsibility of. Again, I am repeating, public health is the responsibility of dash. Primary sector, government sector, private sector, none of these. Again, I am repeating, public sector किसका responsibility है? Primary sector, public health. Government sector, private sector, none of these. Smart questions, huh? Good. I'm happy. सर एक और Now, public health is the responsibility of dash. Primary, government, private, none of these. Too smart. A laborer working under a contractor. अच्छा से सुनो. Labor working under a contractor is in which type of sector? वो कौन सा sector में रहेगा? 1, public sector, unorganized sector, service sector, or none of these. Labor working under Contractor वो कौन सा sector में आएगा? Public में, unorganized में, service में, या none of these? Hey guys, Ayush and company, Arya and Nimai, keep writing. Then we are jumping to question number 9. What is question number 9? 10 only, not more than that. Which of the following professions? Which of the following professions belong to the primary sector of the economy? Primary sector, huh? Fisherman, factory worker, teacher, and a doctor. ये चारों में से कौन प्राइमरी सेक्टर में है? फिशरमैन, फैक्ट्री वर्कर, टीचर एंड डॉक्टर. कौन है जो प्राइमरी सेक्टर में आएगा? Then next. The sum total, ये थोड़ा टेक्निकल है, of production of all goods and services in 3 sectors are combined. P, S and T का पूरा इनकम कंबाइन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? NDP, NI, GNI. I will not tell the full form. ये एग्जाम में. And last is GDP. NDP, NI,
GNI and GDP. पहले बात सबका full form मालूम है क्या? I don't tell you. GNI नहीं मालूम. National income. Shall I add more 3? Correct. Information and technology is a part of IT is a part of which sector? Tertiary, primary, secondary, all of this. बहुत simple है. But IT. Information and technology. Primary sector, secondary sector, or all of these? Primary, secondary, tertiary, all of these. All of these. Tertiary पहला है, primary दूसरा है, secondary तीसरा है, चौथा है all of these. 11 and 4 करते हैं, 15 होते हैं, ठीक है? Assertion and reason we are moving. Last time I remember she wrote the entire options on the board. No need ना, अभी आपको मालूम है ना? चल. First assertion and reason. Start writing A. GDP shows. ना वो तो लिखना है. GDP shows how big an economy is. GDP shows how big an economy is. Reason? R. GDP is the value of all goods and services produced within the domestic territory of a country. Produced within the domestic territory of a country in a year. I'll pick up the shortest one. तो आपका लिखना भी बहुत कम होगा, है ना? एक assertion. Reliance industry. Oh my God, Mukesh bhai. Is privately owned firm. Reliance industry is privately owned firm. Firm. Reason FIRM. तो firm ही बोल रहा हूँ मैं अभी. From बोला मैंने. Thank you. Reason. Government is a major stakeholder. Government is a major stakeholder in Reliance industry. The reason डाला है, but in. Government is a major stakeholder in Reliance industry. Thank you, thank you. Throat gets a busted up. मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, उसको भी कट शॉर्ट करता हूँ आपके लिए, और तू एक ऐसा बढ़ सकता हूँ. हाँ, 3. I'll give 4, so 11 plus 4 will be 15 for us, है ना? ये केस बेस्ड है. Rakesh is an educated and skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank in a city. High monthly salary. As he is employed in a private bank, bus in a city. Reason. All service sectors in India are growing extremely well. All service sectors in India are growing extremely well, and each individual is engaged in any kind of tertiary activity, earns a high income. So last one to go.
राकेश नहीं रुको ये बहुत बड़ा केस है there are several goods and services assertion हाँ वो छोड़ दो ना आगे बढ़ो welcome assertion I'm reading new one there are several goods and services अब G and S लिखो goods and services capital G and capital S that the society needs हाँ बहुत जल्दी है बताओ इधर दे मेरे से पूछ however Huh? however Goods and services. however could you play हाँ session नहीं चल रहा है अभी the private sector does not produce all of them however private sector does not produce all of them reason private sector is profit driven private sector is profit driven I'm giving extra 5 minutes not to discuss but to check your assertion reason to solve 5 and 5 minutes for your MCQ set चलो हाँ assertion reason का नहीं लिखना है and be very careful for your A and R what C is true, but R is false. and last one is A is false R is true चलो जल्दी The reason private sector is profit driven. we are with the last part of our class then only one chapter is left that is the easy chapter development Rakesh is an educated, skilled worker who earns a high monthly salary as he is employed in a private bank. Right. Employed in a private bank sector. wait He is also Alsh. shall we Yes, sir. No. those how many boys have completed one he is completing two B so विशाल तेरा वाला कॉपी कर दे एक मिनट रुक जा and it also everything it's like a omelette and हाँ ये पूरी चीज है अगर तू ले ले तेरा कॉपी उसको दे हाँ उसको उसका दे तेरा क्या होगा ठीक है सर अरे रुकना अरे girls are you girls ready Now. Ready? well slowly just ready अरे अरे तू ले लेना उसको भी ले ठीक है ना लेके and don't give marks if only A B C D is written cancel 0 MCQ और जो B लिखा है C लिखा है उधर से 0 जो वर्ड चाहिए हाँ ऑप्शंस नहीं चाहिए assertion में पूरा चाहिए मुझे नहीं मैं MCQ में बोल रहा हूँ ये ऑप्शन डाला है तो 0 मार्क्स दो इवन इफ इट इज करेक्ट है अभी good to go yes sir हाँ फिर से दिए 10th में जरेगा कोई स्पेलिंग चेक करता है क्या 0 दे क्या अरे क्या आज
तो बेटी करने से उसको लेके आप आज के पहले हम पूछ रहे चालू कर सर हाँ ये लोग बना के लोग बैठे हैं ये लड़कियां पूरा ऑप्शन भी नहीं बोल रहा है। कौन सी गेम है? अरे आज ठीक है गलत हो गए आज की दो दिन तो मेरा वो ले लिया उसको। सीधा में आधा रह गया आधा ए दो और कौन है फिलअप कर ओए मेरे को आप याद नहीं है तो क्या करें अरे बड़ा लेकिन क्या बता देते हैं नहीं बनते अभी तेरे बचे हैं दो मिनट पूछना पता लगी ना भाई यार दो मिनट मैच करते हुए भाई के ना तो मेरे स्कूल में मिस्टेक के बारे में ये है कमी चलिए अभी कोई डिस्कस मत करो आप एग्जाम में I am reading. एक काम करो give that book to her. You cannot say those. You give this book to her. Yeah, I am reading the first MCQ. Those who are wrong, just raise your hand. Oh, wait, I did it. You didn't give it to her, na? Hey, what is your to give it to her? Already so क्या switch भी होता है तो double switch भी करता है. Your notebook should not be there. Sorry. I'm reading the first MCQ. Everyone be ready. Yes, sir. I'm going to raise the person who has not done correct. Then it is. ATM is an example of primary, secondary, and tertiary. How many have marked tertiary sector? That is correct. Zero there. Tertiary. Second one. Hidden unemployment is also called as disguised unemployment. Raise your hand. I need to see. Disguised. Anybody unwanted answer? Chalo, next one. Third one I'm reading. Converting iron is a part of primary, secondary, tertiary, and all of this. It is secondary. How many have got wrong? The secondly Nahi, zero. एक alphabet एक alphabet में missing is zero. We do that in board. Fourth one I am reading. Manrega gives job for 100 days. Anybody written 90, 80, 70? They are the poorest in my class. It is 100 days. Next, fifth one I am reading. Which following activities not related to primary? The fishing to primary hai. Making of sugar also primary. Mining is also primary. But then natural gas extraction is not primary. Making of sugar is secondary. Primary है. ये भैया sugarcane कहाँ से आता है? अच्छा, extraction of gas is how is primary then. Extraction of gas. Mining is a primary. Sir, extraction of resources. Sugar industry किसमें आता है? Sugar industry secondary है. कौन बोल? Sir, factory sugar. Mining of gas. Next. ठीक है then. Secondary सही है. Go for that sugar industry. Sorry. Right. Let us go to the sixth one. Which among the following workers are not productive in tertiary sector? I am telling the right answer. Just wait. Educated, trained, repair persons and daily wage earners. Yes, sir. They are not earning too much. Educated and trained people like us. People in defense service का तो कमाई government देता है. और people working in health center तो hospital है. Hey guys, oh, listen. She is saying it is tertiary. So defense people do not produce any service. What service they do then? Tertiary sector they do not. अरे बाबा प्रोडक्टिव नहीं है क्या उनका सर्विस? डिफेंस
नहीं डिफेंस का उससे प्रोटेक्टिव नहीं है कंट्री में करोड़ रुपए क्यों खर्च करता है उनके पे तो इसका आंसर क्या है? सेकंड वन रिपेयर पर्सन्स लेट अस गो टू द सेवेंथ वन public health is a responsibility of directly it is government sector anybody wrong answers आयुष का कौन सा रॉन्ग आया है सर एक भी रॉन्ग नहीं है सब पर तो देख के छाप रहा है क्या बिना देखे छाप रहा है eighth one I'm reading okay eighth one a laborer working under a contractor it is directly an unorganized sector if anybody writes private sector it is wrong contractor है उसके नीचे में काम करता हूं नहीं कैसे होगा common sense है next is ninth one I'm reading ninth one either which of the following come back to you which of the following profession belongs to primary sector fisherman is primary sector somebody might toss me off for factory worker it is industry and next is 10th one is it 10th one na just let me check GDP वाला question था। sum total is directly GDP no NDI no NI what is GNI gross net national income NI NDP net domestic product. Let us go to the 11th one. IT is a part of tertiary sector. How many have got all 11 correct? All 11. All 11. Sure. वो किसका बुक है भाई? शंभू. अच्छा. How many have got 10 correct? एक काम करो ना, give the books back to them. Bye. हाँ वो तो आप खुद ही कर सकते. Assertion reason you fairly check for yourself, which I am going to read. How many have got all 11 correct? 1, 2, all 11 correct. Sir. yes sir Okay, good. Only Ayush. Sir. Hey, how many? Hey, good. How many have 10 correct? Hey, boy. How many have got 10 correct? कोई नहीं. How many have got 9 correct? Poor. You have to work hard. How many have got 8 correct? Very poor. She's counting. 8 only. How many have got 7 correct? Failure. सुनो से क्या? 7 कैसे मिला रे तुझे? तो नहीं इसे तो फिर नहीं तो भी नहीं हुआ Assertion reason first one I'm reading. Be ready with your answers. I will pick up a person. GDP shows how big an economy is. GDP is the value of A. How many have got A? Sure, don't I say हाथ मत खड़ा करो. Correct. Second one. It is answer is C. Yes, it's twice one. If it is C, then only correct. अभी तुरंत C डाल के कोई करे. Third one, Rakesh वाला example है again C. C is correct. Assertion is true. Reason is false. All service in India are growing extremely well. ये चिन्हुले engaged in tertiary में गरीब वाला भी है तो कम कमाता है. Painter है. But for Rakesh, how can we get define that that's true or देखो राकेश क्या है एजुकेटेड एंड स्किल्ड है हाँ तो बट देयर आर टर्शियरी में जो बहुत कम कमाते हैं प्लम्बर है फिटर है हाँ तो अभी क्या करेंगे दैट इज ट्रू but the reason is wrong no that is wrong let us go to the fourth one and the last one several goods the answer is A how many have got A anybody have a query like she was asking B कैसा होना चाहिए बोल ना B wrong Sir, C होना चाहिए. हाँ तुम तो absolutely wrong that is your mistake now how do I take that sectors हो गया है go for chapter number 1 which is very likely chance you will get many because it is not a weighted chapter directly I am giving you MCQs right chapter name development भी आएगा पहले MCQ तो कंप्लीट पढ़े MCQ number 1 development Sir, बोल development. development MCQ
Sir, only MCQ. Only MCQ followed by other. Time है please. Time is only 8:10. Write down first MCQ of assertion basis. It is little bit faster. Try to push 20 here. Per capita income. Listen very carefully. I'll repeat only 2 times. Per capita income hides A. Disparities, average income, total population, none of these. I'm reading the question. Per capita income hides disparities, मतलब वो छुपाता है. Average income, total production, none of these. Second question. Disparities, average income, total population, none of these. Next. Development of an individual. Again, I'm reading. Development of an individual refers to A. Mental development. B. Physical development. C. Spiritual development. And D. Overall development. Development of an individual refers to mental, physical, spiritual, overall. Quick. Next. Meaning of development refers to. I'm saying meaning of development is different for us. It is different for A. Different people. बहुत simple. In fact, alien people, same people, none of them. Development of an individual. Meaning of development refers to different for. Meaning of development is Different for that. Different people, alien people, same people, none of them. 2, 3, 4. Classical view of economic development. Very good. Classical view of economic development includes per capita income, national income, none of these, both A and B. Old economic development means includes PCI, NI, none of these, NI. Both A and B. So can you repeat what you just? 5th. So what do you say? Pottabelly goes to a Delhi. You are making me that Pottabelly. I saw kind of please repeat. Thank you. First you said different after now you said. Same. How many What everyone? PCI and PCI? हमारे बाजू में those pages. So Write down the next one. national income or both of these or none of these? Full form of ऐसा आना चाहिए बोर्ड में. Full form of SED. अभी आंसर आ रहा है. SED. Sustainable economic development. Second, how beautifully they have confused you. Simple economic development. Actually, ये topic है और हम लोग इसमें पढ़ाई भी की है. And sound economic development. None of these choices are very smart. SED means sustainable, simple, sound. None of these. What I No, you don't know anything. You're right there. Okay, what is the number we are doing? 4, 5. 6. Oh, exactly. That Thank you, my dear. I'm always back. Which among the following is not a public facility? Not a public facility. 1. Transport and electricity, roads and bridges, private schools, government schools. Is not a public facility. Yes. Transport, roads, private schools, government hospitals. No easier than this. IMR stands for IMR, infant mortality rate, international mortality rate, सुन लो, Indian mortality ratio, none of these. इतना simple कोई नहीं दिया रहेगा. IMR, infant mortality, Indian mortality, international, none of. Next one,
The dash helps in, slow, मैं बहुत slow जा रहा हूँ. The dash helps in maintaining the nutritional level of people. Okay, by providing food at a very low cost. Answers are BMI, body mass index, PDS, public distribution system, GNI, gross national income, HDI, human development index. अभी ये कौन सा चारों में से poor people को income providing nutrition at a low cost, food, PDS, BMI, HDI, GNI. Nine. That's right. हम लोग कह रहे फ्रॉड का बहुत हो जाता है फिर लास्ट में BMI, PDI, GNI, HDI. PDS. The literacy rate is highest in Kerala, while IMR rate is highest in Bihar. Right? वे options कैसे आ रहे हैं? ये वो है अपना assertion and नहीं MCQ है. Most of the people in Kerala and Bihar have good living conditions. Both Bihar and Kerala lacks basic necessities. Standard of living in Kerala is better than Bihar. Standard of living in Bihar is better than Kerala. Simplest. One more time. Go ahead. Take last one. Most of the people in Kerala, Bihar, good living. Bihar and Kerala lacks necessity. Standard of living better than Bihar, Kerala. And last, standard of living Bihar is better than Kerala. Kitna short में पूरा क्वेश्चन है. 11th one. 10th one है मैं तो ऑलरेडी 10th में आया तो फिर ये 9th है. ठीक है. Then 10th one. Smart choices. बोर्ड में ऐसा है तो then you should be on your toes. Already Kerala आया है. The per capita income of different countries. Per capita income of different countries is counted in which currency? Question understood? Now the choice. Rupees, pounds, US dollars, Canadian dollars. Full form लिखना है. Answer ही full form दिया है. तू क्यों short form लिखेगा? Shall we cross check this only first? Yes, sir. हाँ पहले complete करो. हो गया. हो गया है? क्या? चलो जल्दी नेबर से ही कर लो. नोट को पेस्ट करो. हाँ उधर इसे करो. हाँ कर दो. हाँ ये बुक उसको दे दो. अंकना भाई. हाँ हो गया. अब tell me the first question we are reading. एक काम करता है. Instead of me reading, I'll plot one people. It is easy. I'll let this girl read first one. Ayushi. Right. First one. Read. Answer. A first one answer she has given disparities. How many have marked the disparities? Disparities online. तीन बात कैसे? Right answer. Now let us have she giving second answer. इसका बुक किसके पास है? हाँ जरा read करो. Overall development. Second answer stands for overall development. How many have marked that? Overall development. ये लोग ने क्या mark किया? That is correct answer. हाँ. Third question here. What's you read? उसका आपका book किसके पास है? Are you listening? Is it different people everyone? Yes. Correct. That is very simple. Now that last boy. उसका book किसके पास है? Atharv, you read his answer. Per capita income is the right answer. Now let us both A and B. Per capita income भी और दूसरा भी तो है. दोनों मिला क्या? Then both A and B. I repeated the options 2 times or we did not repeat the options 1 time. आधा मार्क दे दो बच्चे को. इतना मेरे से जा रहा है. I Let us go to the next question. Who will read? Who is having his book? Tell the answer. Fifth question. Sustainable economic development. That is correct. Anyone who has not marked SED as sustainable economic development. In fact, मैंने इसका meaning भी दिया है ना.
Yeah. Let us go to the next one. This bacha ka notebook is with whom? Her only. You read Private schools. private schools, very simple. Then next, you only read income. It is IMRS infant mortality rate, very simple. नहीं वो मेरा नहीं हुआ इसी का ठीक है, very simple. Last one, 10th one, who can read? Eighth one, where are we? You read. Your book is with whom? You read. Yes. PDS का क्या full form पीछा है ना? Full form नहीं पूछा. Wait. 8th one, IMR है ना? नहीं वो four people को एक उसको था Answer क्या है वो बताओ. That is correct. PDS is correct. मुझे क्वेश्चन में देखने का जरूरत नहीं. And the last one, you only read. Second. Standards of living in Kerala is better than Bihar. Yes. Kerala ka standard of living better है बिहार से. And last one you read for her. It is USD. I think anybody who has not got all 10 correct. All 10 not correct. All 10 correct. To extend the books, easy. You didn't get all the 10 correct. Which one you got wrong? That's okay. Why? Which one is this? And और कौन है जो 9 correct है? कौन सा wrong हुआ? कौन सा है? Yours? कौन सा है वो? That's correct. क्यों ये because दूसरा भी है ना? Careful ले लो. Learn by mistake. How much you got? 10 out of 10. Really? Right? Ayush, how much you got, boy? Sir, 9. You also. Which one you got wrong? Sir, I got confused between the options. So I wrote the wrong answer. Chalo, I'm discussing MCQ. 5 MCQs will perfectly fit in. Chalo, start. My words. Assertion reason. Certainty. First, A and R. Non-renewable resources. Non-renewable resources are abundant in nature. Non-renewable resources are abundant in nature. Next. And the reason is renewable resources cannot be replenished. Replenished का meaning है renew का over a period of time. What? Cannot be replenished over a period of time. Next. Sustainable development is essential for economic growth of the countries. Sustainable development is essential for economic growth of the countries. Reason? SD, that is ensures that environment SDE ensures that environment friendly measures are adopted. Ensures that environment friendly measures are adopted for carrying out production process. Third one. ये थोड़ा conditional type है. Suppose the literacy rate
Suppose. हाँ, तो reason पहला कभी बोलेगा. हाँ, in a state is 78% and the net attendance ratio. Net attendance ratio is 47%. ये नेट अटेंडेंस का मतलब जितना एडमिशंस लिया उतना आउट ऑफ दैट होल स्टेट कितना लोगों ने एडमिशन लिया. ये बीच में एब्सेंट रहना प्रेजेंट रहना वो नहीं है. समझ में आया? अभी कोबर कहना में जरा 10 लाख पीपल लिविंग, 2 लाख पीपल लिविंग, उसमें से 1 लाख लोग की पढ़ाई में एनरोल किए, तो अटेंडेंस रेशियो इज 50-50. समझ में आ रहा है? जो एनरोल किए आ रहा नहीं आ रहा वो जा रहा है, वो दैट इज नॉट. उसका रीजन more than half of the student, more than half of the students are going to other states. More than half of the students are going to other states for elementary education. थोड़ा ट्रिकी है, रीड बहुत वेरी केयरफुली. हो गया? हो गया. हाँ, total enrollment. Now fourth one. So you just said 3. So I should say 8 now. Different people. One more. Next one. Have different goals. The बहुत simple है ना? Different people have different goals. Different developmental goals ही लिखो चले. Reason. The capitalist approach. Reason. The capitalist approach is. The word is this. Exam आएगा तो don't bounce अभी कौन सा word है? Is detrimental. अब मतलब dangerous है. अब ये नहीं लिखना तो dangerous लिखो, but I will advise you to write this because in exam they use such body bharkam words just to confuse you. Detrimental to poor section of the society. Detrimental to the poor section of the society. So the last one to go today. A high average income. Assertion. A high average income is not indicative. Indicative of the overall well-being of the overall well-being of a country. अगर बहुत कुछ खा रहा हूँ तो ज्यादा नहीं लिखने का कोई words. Reason. Average income does not cover indicators like level of literacy rate, health facilities, and public facilities. Let us take some good time here because I seem to be, seeing the questions which are pretty good, challenging, है ना? ये जरा sit. And put up your brain to the work. And No, what back did to you the slide options. what did you Can you slide option for consider? no? Try to full sentence. Yeah.
They are the company and good छोड़ दो क्या हमारी एकदम देखते हैं कोई नहीं आने सब लोग हैं Are you going to discuss? I remember one of my very good buddies, जो का अमेरिका में रहता है, हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, वो हम लोग जब मास्टर्स करते थे ना, एक्चुअली मास्टर्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इस टाइम पर मैं बहुत कंफर्टेबल कार्स लेकर आता था, और अंदर उस समय पहले अभी जैसे तूने उसको सिग्नल किया, मेरे से बोला पूछा पढ़ाई हो गई क्या, बोला कर रहा हूँ, मेरा तो हो गया, मैंने पेपर फ्री है, तूने कैसे क्या, टेंशन मत ले, 1 घंटे के बाद वो कहीं तो बैठा रहेगा, सिग्नल आएगा, हो गया तो सॉल्व करो, 3 घंटे का पेपर है मास्टर्स का, और ये भाई सब 1.5 घंटे में वो कार रहेगा, यू अंडरस्टूड, फिर कार में कौन बैठेगी, ये भाई सब राउंड मारता रहेगा, 3 घंटे तक गुजरे, जैसे मैं आएगा ना, जैसे अभी तू पूछा क्या है, ऐसा बोलेगा, पूरा सिग्नल पे बात चालू है, मास्टर्स में कौन देखेगा ना, मुझे बोलेगा क्लैप फॉर द स्कॉलर, आप 3 घंटे तक अंदर बैठा, आई क्लैप फॉर यू, बोले क्यों, उसका पूरा होगा, मैं तो 3 घंटे का पेपर 3 घंटा तक भी सॉल्व नहीं किया, तुम तो 1.5 घंटे में सॉल्व कर, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ही वाज द फर्स्ट फेलियर इन माय ग्रुप, तो उसका पापा आई रिमेम्बर थाने में कहीं तो उसका कुछ 1.5 या 2 CR का, तो उसी टाइम पर उसका बिजनेस था, और ये एक ही बेटा, let us have the first one going, Shambhu, what is his name, Shambhu reading first one, how many have got this correct, how many, Ayush, which one you have marked, anybody have marked, you marked a different one, is there, second one, boy, you only say, how many have got A for second, you didn't, why, अरे मेरे से बोलो देना, I can tell you, wait, who has not marked A, only one, you also, A, then is not saying, third one, you read,
You read, boy. Is A the correct answer? Correct. Boy, you say. Third one. Both your A is to R. तो A B C D बोल दे खत्म नहीं वो क्या है third one R is not the correct explanation for a book. how many have got a key कौन सा question Sir, A is. Third is rate all question. A requirement. Sir, suppose sir, A sir. so read कर ना read कर Suppose the literacy rate in a state is 78% and the net attendance ratio is 47%. And the reason is more than half of the students. ये है in the another school हाँ. another village that is the correct option last one वो option मालूम नहीं है तो जो भी है how many have marked fourth one B everyone ओए fifth one अंकन Sir, एक मिनट fourth का question read करो Different people have different goals. The reason the capitalist approach is detrimental to poor section of society. ठीक है Reason. क्योंकि डिफरेंट पीपल का ओपिनियन डिफरेंट है ये कौन सा सोसाइटी में मिलेगा तो A होना चाहिए. अरे बट कौन सा सोसाइटी में मिलेगा sir, but for some people, capitalist approach is provides. कैपिटलिस्ट अप्रोच सबका सेम ही रहता है सर तो उसके लिए अच्छा होता है. अभी डोनाल्ड ट्रम्प कितना लोगों के लिए अच्छा है For Capitalist approach. he is only with his clan he is only with his clan अभी कैपिटलिस्ट में हर लोग करोड़पति या मल्टी मिलियनर नहीं रहता है माय डियर अभी अपना भी एक कंट्री कैपिटलिस्ट अपना नहीं है कैन आई कोलाइड विद मुकेश अंबानी व्हाटएवर ही सेइंग इज करेक्ट क्यों ना लिटरेसी बिकॉज आधा से ज्यादा लोग दूसरा स्कूल में प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किए नेट अटेंडेंस रेशियो इज लेस देन हाफ या हाफ है ना adjoining school adjoining village में जाके उन लोग ने प्राइमरी स्कूल के लिए डाला What the half? Other states. हाँ तो that is correct हाँ उसी fifth one A anybody have not got A why what did you read the question first Assertion of high average income is not indicated of overall well-being of a country. Reason average income does not cover indicators like level of literacy rate, health facility and public facility. तो ये एवरेज इनकम पे वैसे भी कवर नहीं होता है no it is A both are correct Both are correct. hey listen now it's hardly 2-3 minutes almost for this But it should be fair. How is that right now? they were not available renewable resources can be replenished ये तो wrong ही है ये right है hey guys listen till your board exam your school might have been allotted already and did you fill that LOC with your school Yes. you got your any corrections or anything No, everything was correct. be very careful with your name surname DOB अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ then application process अभी CBSE ने क्या किया मालूम है ना वो डिजी किया कुछ तो देता है वो आप लोग डायरेक्टली आप ऑनलाइन में डालो एंड स्कूल्स में से आपको सर्टिफिकेट्स भी शायद इस साल से नहीं मिलेगा आपका माइग्रेशन सब कुछ आप डाउनलोड साइट से ही आपका आईडी डालकर निकाल सकते तो स्कूल में आना जाना टेंशन चलो गॉड ब्लेस यू ऑल इट वाज नाइस सो आई विल कम बैक नेक्स्ट academic year thank you